Radhe Radhe children. Today we are supposed to start our next part of chapter number 1, chemical reaction and equation. Now in the second part we are supposed to study about types of chemical reaction. अब आप लोगों के बुक्स के अंदर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन दी है, जिसमें सबसे पहले रिएक्शन को फर्स्ट नंबर इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन इज नोन एज displacement reaction, and fourth is known as oxidation and reduction reaction. हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है. केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. Now we will study individual type of reactions. Now first reaction, that is known as combination reaction. अभी नाम से ही रिएक्शन ऐसा है कि जो हम लोग इजीली लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन. अब हम लोगों ने सारे के सारे रिएक्शंस बच्चों को इजीली लर्न रहे, इसलिए उन सबके एक शॉर्टकट दिए हैं. हमारे सारे शॉर्टकट्स एक मूवी का नेम है, मीन्स ऑल द शॉर्टकट्स आर द नेम ऑफ अ मूवी. नाउ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज नथिंग बट वी हैव गिवन अ नेम, दैट इज विवाह. विवाह में होता क्या है, एक लड़का एक लड़की दोनों मिलते हैं और उनकी शादी होती है और आगे उनकी फैमिली बढ़ती है, न्यू प्रोडक्ट आती है, दैट इज नोन एज विवाह. सेम वे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन बोलती है व्हेन 2 or more elements or compound combines with each other to form a new product, then such type of reactions are known as combination reaction. फिर से मैंने आपको combination reaction का नाम क्या बताया, विवाह. विवाह में होता क्या है, एक लड़का एक लड़की दोनों मिलकर शादी करते हैं और आगे उनकी फैमिली बढ़ती है, that is new product comes. Here also combination reaction means when 2 or more elements or compound, you can also use a word substance also here, combines with each other to form a new product, then such type of reaction is known as combination reactions. Now example for combination reaction. First, very easy example, you know, carbon when reacts with oxygen it forms carbon dioxide. तो ये दो अलग अलग हो गए और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया. You know, carbon can be in solid form, react with oxygen, that is gaseous form, forms carbon dioxide, again it is in gaseous form. Second example, hydrogen when reacts with oxygen to forms water. Now this is an unbalanced reaction, year 2 and year 2 it becomes balanced. Hydrogen is in gaseous state, oxygen is in gaseous state, water is in liquid state. तो फिर से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combines with each other to form water. Third, calcium oxide when react with water it forms calcium hydroxide. Calcium oxide is in solid form, this is liquid and this becomes aqueous form. Now this type of reactions are basically known as combination
reaction. Now, combination reaction also give rise or also give birth to one new type of reactions. That is, in combination reaction, we get one new type of reaction which is known as exothermic reaction. Exo means release, that is energy release. Exothermic reaction means the reaction in which energy is released is known as exothermic reaction. We have various examples of exothermic reaction. For an example, if I take first here example, if I take methane, that is CH4, if I take methane and react it with oxygen, so we get carbon dioxide plus water plus, I'm writing here E. E is nothing but energy. So three things we get, that is carbon dioxide, water, plus energy is released. So this type of reaction is known as exothermic reaction. Now children, before going towards next example, we must go with a small topic you have already learned in your smaller standards. We get energy when we eat food. That is, when we eat food, we get energy. Now, is it true with all the sense कि we get food with only and only eating the food? अगर मैं रोज काजू किशमिश बादाम खाऊंगा तो क्या मेरे अंदर अच्छी एनर्जी आ जाएगी? नहीं। एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी सिर्फ खाने से नहीं आती है, बट एनर्जी कम्स विथ रेस्पिरेशन. आपको याद होगा रामदेव बाबा हैं, जो योग गुरु हैं, वो कह के मर गए योग करो योग करो योग करो. तो वो क्यों बार बार कहते हैं योग करो? योग करने से क्या फायदा होता है? तो योग करने से ये फायदा होता है, सी व्हेनेवर यू ईट एनीथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल it goes in your body in the form of carbohydrates. Now that carbohydrates gets break. जब आप खाना खाते हैं तो आप रोटी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो everything goes in your body in the form of carbohydrates. अब जब आप उसे चबा रहे हैं तो when saliva gets mixed with it, now that carbohydrates gets break and get converted into glucose. Now what is the formula of glucose? तो glucose की formula है, I am writing here second equation here. ग्लूकोज सेकेंड नंबर एग्जाम्पल है. ग्लूकोज की फॉर्मूला है, इसे हम ऐसा याद रखते हैं, चो, CHO, चो, 6 12 6. तो ग्लूकोज इज C6H12O6. तो इसे हम क्या बोलते हैं? चो, 6 12 6. ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? चो, 6 12 6. दैट इज C6H12O6. Now, when this glucose gets combined with oxygen, जब आप प्राणायाम करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो उस समय पे जो आपने खाया है उसके अंदर अगर आपके पास ऑक्सीजन रिच एयर अंदर जा रही है, तो अब वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके इट गेट ब्रेक्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड. जो हम सांस बाहर निकाल रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, then water and energy, and this is the energy which gets stored in human body. This is the energy which stored in human body. So now this is an equation. Again, I don't have space, so I'm unable to write here. You can remember C6H12O6 is nothing but glucose. When it reacts with oxygen, it forms carbon dioxide, that is CO2, H2O, that is water, and energy is released. Because energy is released here, so now this is known as exothermic reaction. Now to balance this reaction, we write here 6
Here also if I write 6, then 6 carbons at both the side. 6 2s are 12. 6 2s are 12. And writing 6 to this side, the reaction gets balanced. Now, one more example, that is third example, decomposition of vegetable waste in compost. That is, जब बायोगैस प्लांट के अंदर हम सब्जियों को डालते हैं या तो सब्जियां सड़ती हैं, तो वो भी सब्जियों को जब डालते हैं और उसमें से एक एनर्जी क्रिएट होती है जो गैस क्रिएट होती है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो फर्स्ट एग्जाम्पल वी कुड राइट इट एज burning of fuel, that is burning of methane. CH4 is methane. Burning of fuel is an exothermic reaction. Second, respiration process, that is digestion of food. Digestion of food नहीं कहेंगे मगर respiration is also a exothermic reaction. And third, that is decomposition of compost vegetables in biogas plant is also an exothermic reaction. Now once again, see I have written here on another side so you can easily take down these notes. Here exothermic reaction, first example was of burning of fuel, that is methane. Oxygen is again in gaseous form, carbon dioxide in gaseous form, water in liquid form, and energy is released. Same way, respiration in human beings. This is glucose, oxygen, carbon dioxide, water plus energy. And third is decomposition of vegetable matter in the compost biogas.